and get you all the details of that. My colleague Meenakshi is also joining us live for more details on this. We'll cut across to her in a short while from now. Meenakshi will be giving us the details in terms of the protest that has started in Pune's Koregaon area. There are the visuals, and Meenakshi is standing with us. Meenakshi, over to you. I am outside that land, that 40 acres land that has been sold to MED Enterprise, which owned by Ajit Pawar's son Parth Pawar. And now protest is going on. Land owners is with me. आपका ये जो जमीन है 40 एकर्स का, वो बेचा गया है, वो कैसे बेचे? आपने परमिशन दिया था? नहीं, परमिशन नहीं दिया। कैसे बेचे वो लोग? अभी क्या पता, किसी ने उनको परवानगी दिया ना, हमारा जागा उसने ये किया। कैसे बेच सकते हैं? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का लीज दिया हुआ था आप लोगों ने गवर्नमेंट को, और उसके बाद ये बेचने का कोई परमिशन नहीं था। किसने बेचा, कैसे बेचा? वो हमको कुछ पता नहीं। शरद पवार, अजित पवार मोठा आमदार आहे, त्यांनी काहीतरी चालवलं असेल पाऊर आणि त्यांनी घेतली त्याच्या पोरांनी जमीन। बहन के पास रहता वो, और ये इधर हमारे घर वाले ने भी 7-12 में भी लफड़ा किया है। मतलब आप बोल रहे हैं कि आपके परमिशन के बगैर यह बेच दिया गया है। Let me see all here now, and I can see here all protesters. They all are landowner here with me. ये जो बेचा गया है लैंड, आपका परमिशन लिया है? नहीं लिया, हमारा परमिशन नहीं लिया। कैसे बेचे? वो बेचा कैसा, एक शीतल तेजवानी करके बिल्डर थी, हमने उसको जगह छुड़ाने के लिए पावर ऑफ पेटेंट दी थी, पावर ऑफ पेटेंट जगह छुड़ाने के लिए दी थी, लेकिन उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल करके अजित पवार के लड़के को जगह बेच दी। उसका स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं 500 रुपए में, इसको 21 कोटी स्टैम्प ड्यूटी होता है। अजित पवार के लड़के को दे दिया जमीन, आप बोल रहे हैं? कौन अजित पवार के कौन सी कंपनी को दिया है, क्या नाम? अमेडिया, हाँ, उसका वो डायरेक्टर है अजित पवार का लड़का। पेट्रोनी का गलत इस्तेमाल किया उन लोग, सत्य का गैर फायदा लिया। कितना जमीन था, क्या इसका रेट था, कितने में बेचे? 43 एकड़ 38 गुंठे जगह है, उसकी कॉस्ट 1800 करोड़ रुपए। और कितने में बेचा? वो 300 करोड़ में बेचा, और शेतकरी कुछ मालूम ही नहीं। आपका भी लैंड है यहाँ पे? हमारा ये सब हम वतनदार है। कैमरे पे बात कीजिए। आपका लैंड किसने बेचा है? अजित पवार के सन पार्थ पवार का नाम आ रहा है यहाँ पे पार्थ पवार का नाम आ रहा है, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमारी जगह जो शीतल तेजवानी है उसने सेल करी है। कौन है ये शीतल तेजवानी? एक बिल्डर है, जो कि हमने उनको पावर ऑफ अटॉर्नी इसलिए दिया था कि कुछ वो हमें वापस कर दे हमारी सरकार से जगह। मतलब आपका जमीन सरकार के पास लीज था, ये पावर ऑफ अटॉर्नी आपने तेजवानी ग्रुप को दिया था, और वो बेच करने खालसा करा। जब लोग वो खेती नहीं कर रहे थे तभी खालसा हो गई है। लेकिन अभी नवीन एक ऐसा रूल आया है कि जिनकी जगह है वतनदार, उनको वापस किया जाए, तो वो सब वजू रखा है और वो ये सेल हो गया है। 1800 करोड़ का जमीन 300 करोड़ में बेचा, और स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं दिया। उसकी अमाउंट तो बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत मार्केट है, यहाँ पे ये बहुत वैल्यूएबल प्राइस है यहाँ की। They are saying, let me show you that land. I am now outside of that land. Let me show you that land. They are saying it's a cost about 1,800 crore, and they sold that land in 300 crore. This is the land. And this is 40 acres, Koregaon Park, very poshest area of Pune. As we know, this is 40 acres land, and what happened here? We know what is the scam now. The main allegation is against MED Enterprise LLP of Parth Pawar and Digvijay Patil purchased these 40 acres of land in Koregaon Park, which was categorized as Mahar Vatan land, and it refers to hereditary land holding where the Mahar, it's a scheduled caste community, were forced to provide labor for village administration, and the land was given to them.
such lands can't be sold without prior approval from the state government, and now the allegation is total cost of this land is 1,800 crore, but it was sold to Powers company at 300 crore, and including a waiver of stamp duty. And landowners, they don't know about all this. They gave their power of attorney to Tejwani Builder Group, but this group also not allowed to sell this property because it was given to government for lease only, and its lease period is till 2038. Now question is that what was revenue department doing, what was government doing, why that company MAG Enterprise, which owned by Ajit Pawar's son Partha Pawar, what about this enterprise? What investigation was done with this enterprise? This is the main question, and now these landowners are protesting here outside this Koregaon land. Back to studio. That's right, Meenakshi. Also, as you were bringing us the voices of the people, the fact that the land transfer document was registered after collecting a token stamp duty of rupees 500, and they had cited an industrial concession. So an entire case of, fraud that has been also seen. But Ajit Pawar there distancing himself from the entire controversy. Yes, as we know, yesterday we have asked a question to Ajit Pawar what his comment about this allegation against his son. He told to us that he will not speak on this matter now, and he will gather information, then he will speak. Now he has scheduled a press conference at 5 PM today, and let's see what he will say on this. But landowner of this property, Chandrakant Gaikwad, exclusively told to Republic that he has seen Partha Pawar's name on the sale documents. Why? Because we know this MAG Enterprise is linked to Partha Pawar and Digvijay Patil. These two persons are directly involved with this MAG Enterprise. This enterprise purchased this 40 acres land, and one of landowner spoke to Republic, and he said he just have seen this Partha Pawar's name on the sale documents. Very big allegation by landowner on Republic TV. Let's see what Ajit Pawar will say on this, because yesterday he said he confirmed his son is not involved with this case, but now landowners are saying his son's name. Landowners told to Republic TV that his son Partha Pawar's name is there in sale documents. So it's a huge allegation. That's right.